Assalamu alaikum. I'm Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे विच इज़ रशियन क्रूड ऑयल टू पाकिस्तान। नाज़रीन, लास्ट संडे को एक रशियन शिप जिसके अंदर 45,000 मीट्रिक टन जो क्रूड ऑयल था, इट लैंडेड इन पाकिस्तान कराची पोर्ट और दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ द टू शिपमेंट्स दैट वुड कम टू पाकिस्तान। जो पहली शिपमेंट है जैसे मैंने कहा 45,000 मीट्रिक टन की है। द सेकंड वन वुड बी 55,000 मीट्रिक टन जो कि कमिंग वीक्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर आएगी। ये रशियन क्रूड ऑयल जो पाकिस्तान में आया है, इट इज़ सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ डिबेट, नॉट जस्ट टुडे, बल्कि इनफैक्ट ये जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का लास्ट पीरियड चल रहा था और इमरान खान साहब ने रशिया का विज़िट किया था, सिंस देन देयर इज़ अ डिबेट ऑन गवर्नमेंटल सर्कल्स एज वेल एज इन द मीडिया, इन द पब्लिक, अबाउट रशियन क्रूड, इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स, इट्स फिजिबिलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, हम तीन मेन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि वाई दिस रशियन क्रूड ऑयल इज़ वाई पाकिस्तान वेंट फॉर इट, पाकिस्तान के लिए पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि इसके वाले से हमें एडवांटेजेस क्या हैं, और तीसरी चीज़ जो हम बात करेंगे दैट इज़ द चैलेंजेस टू इट, कि क्या इसको ये जो डील है, ये तो इनिशियली जो दो शिपमेंट्स आएंगी दे आर जस्ट अ काइंड ऑफ पायलट प्रोजेक्ट टू जज द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अगर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं तो। सबसे पहले स्टार्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान हर साल एवरेज अगर बात करें तो अराउंड $18 billion आर स्पेंड ऑन पाकिस्तान फॉर इम्पोर्ट ऑफ एनर्जी, पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस। And this oil and gas is important not just for our transportation but also our industry as well as the domestic consumption. लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस डेवलप हुआ, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी था, बट पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की प्राइस बढ़ी है, रुपये की डिवैल्यूएशन होना, प्लस यूक्रेन वॉर है, क्लाइमेट फैक्टर्स हैं, लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स हायर एनर्जी कॉस्ट, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस डेवलप हुआ पिछले 2 साल से, एंड वी आर येट नॉट आउट ऑफ इट। तो पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ ऑलवेज अ डिबेट ऑन गोइंग फॉर चीपर एनर्जी ऑप्शंस, और वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट वाज प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान वाज द रशियन क्रूड ऑयल। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो टोटल एनर्जी नीड्स हैं दे आर 150,000 बैरल्स पर डे, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो रशिया के साथ डील अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो अल्टीमेटली पाकिस्तान वुड इम्पोर्ट अराउंड 100,000 barrels per day from Russia, which means almost 2/3 of Pakistan's dependence would go towards Russia. Before that, we used to buy from the Persian Gulf region and most importantly UAE and Saudi Arabia. अब नाज़रीन इसके ऊपर आते हैं दैट ये जो डील है इसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डील 2 दिन पहले इट वाज कंफर्म्ड दैट पाकिस्तान वुड पे इन चाइनीज़ युआन, और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट द प्राइस इज़ नॉट ऑफिशियली गिवन, और उसकी रीज़न नाज़रीन ये है कि देयर इज़ रशियंस आर अनविलिंग टू गो फॉर पब्लिक प्राइस बिकॉज अमेरिकन G7 हैव पुट अ प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल, और प्राइस कैप की वजह से रशिया इज़ अनविलिंग टू डिस्क्लोज, बट सम स्कॉलर्स रेंज दिस प्राइस टू पाकिस्तान समवेयर बिटवीन $50 to $55 पर बैरल। सो लेट्स कम नाज़रीन, अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि वाई पाकिस्तान वेंट फॉर दिस ऑप्शन, हमने क्यों ये ऑप्शन चूज़ किया, वाई वांटेड टू गो फॉर रशियन ऑयल। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं नाज़रीन, उनमें से एक जो बड़ा फैक्टर है दैट इज़ द इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड एनर्जी एंड पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ अनएबल टू अफोर्ड दैट एट एग्जिस्टिंग कास्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर करंट बात करूं तो करंटली रफली अराउंड $80 पर बैरल के जो कॉस्ट है ऑयल की ये घूम रही है, इट इज़ जस्ट स्लाइटली लेस दैन दैट बट समवेयर अराउंड दैट। एवरेज अगर प्राइस की बात करें तो इट इज़ $80 पर बैरल इन इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन ऑब्वियसली इफ़ वी आर एबल टू बाय फ्रॉम रशिया तो द प्राइस वुड बी मच चीपर, ऑलमोस्ट 40% लेस कॉस्ट बनती है इफ़ वी अज्यूम दैट कॉस्ट इज़ अराउंड $50 to $55 पर बैरल। तो उस सेंस में अगर हम बात करें तो रशियन ऑयल इज़ चीपर एंड इट परफेक्टली मेक्स सेंस फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, एंड दैट इज़ वाई व्हेन पाकिस्तान वेंट फॉर दिस ऑप्शन, अमेरिकन ने का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स ये था कि वी अंडरस्टैंड पाकिस्तान इकोनॉमिक नीड्स, वी अंडरस्टैंड पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड दैट्स वाई अमेरिका डिड नॉट ऑब्जेक्ट मच टू इट, एटलीस्ट नॉट ऑफिशियली। सो पाकिस्तान के लिए ये भी ऑप्शन था, एंड द एडवांटेज टू पाकिस्तान वाज दैट रशिया वाज नॉट ओनली सेलिंग oil at cheaper price because of the
diversion of their energy resources towards Europe. Europe जो है it stopped buying Russian oil, and Russians were looking for the new markets. Pakistan could have been one of the options, and most importantly जो discounted price है, it was driven by the American and the G7 price cap on Russian oil, जो यूक्रेन वॉर से लिंक करती है, but it provided benefits to states like Pakistan. दूसरा इकोनॉमिक सेंस में अगर मैं बात करूँ नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है कि वी इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ द करंट एनर्जी इन डॉलर्स, मोस्टली फ्रॉम अरब स्टेट्स. But with Russia, we were given three options: either go for Russian ruble, or the dirham in UAE dirham, or the Chinese yuan. So we opted for Chinese yuan, and which makes sense for Pakistan because Pakistan का जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है, जो चाइनीज़ करेंसी है, इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल बिकॉज पाकिस्तान इज़ सिग्निफिकेंटली शॉर्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन डॉलर्स. पाकिस्तान के जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, दे आर लेस, दे आर अराउंड $4 billion, not enough even for 1 month of the imports. So Pakistan, it is an economic sense for Pakistan because Pakistan would not have to pay in dollars, and we are desperately in need of dollars despite the fact that we are having this balance of payment crisis. IMF is unwilling to go for this deal. तो पाकिस्तान के लिए हम डॉलर जो है वो डॉलर डेफिशिएंट हैं, हम डॉलर स्टॉर्व्ड हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डील इज़ गोइंग टू प्रोवाइड सम ब्रीथिंग स्पेस टू पाकिस्तान फॉरेन करेंसी रिजर्व्स. अगर हम पॉलिटिकल सेंस में बात करें नाज़रीन, तो पॉलिटिकली दिस गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गो फॉर इलेक्शन दिस ईयर, और हम जानते हैं कि जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, वन ऑफ द रीजंस presented by that PTI for their ouster was because the fact that they believe they were kicked out by the Americans in collaboration with the internal elements. और उसकी बुनियादी वजह जो बताते हैं, बहुत सारों में से एक वजह ये बताते हैं that when Imran Khan visited Russia and he wanted to make energy deals with Russia, the Americans didn't like it, and therefore this became one of the reasons why they kicked him out. So that narrative has been built in the early months of his ouster in 2022, although he is no longer talking on that issue, but that is a factor that is there still in the mind of the voters. So the PDM government, in order to shun this argument, to reject this argument, they went ahead for this deal to convince the people that no, if this deal was the reason why Imran Khan was ousted, then even current government has not just said it, they have imported it. So this could not have been a factor जिसकी वजह से अमेरिकन ने उनकी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पे काउंट किया. तो हम कह सकते हैं द इम्पोर्ट ऑफ दिस रशियन क्रूड ऑयल इज़ अ पॉलिटिकल काउंटर नैरेटिव ऑफ द PDM गवर्नमेंट एज वेल फॉर अपकमिंग इलेक्शंस. Another political factor is the geopolitical factor. नाज़रीन, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप जो है वो पिछले कुछ अर्से से वार्म हो रहे हैं. हम इस पर पहले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, और इस वार्मिंग ऑफ रिलेशनशिप की जो डिस्कशन है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं. उनमें से जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो इंक्रीजिंग पाकिस्तान आइसोलेशन फ्रॉम अमेरिकन एंड द वेस्टर्न ऑर्बिट है. इंडिया का जो क्लोज अलाइनमेंट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक फैक्टर है. प्लस पाकिस्तान चाइना क्लोज पार्टनरशिप एंड चाइना रशिया पार्टनरशिप जो ग्रो कर रही है, दे आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली तो हम कहते हैं जियो पोलिटिकल चेंजिंग जो अलाइंसेज हैं, दे आर पुशिंग पाकिस्तान रशिया क्लोजर टुवर्ड्स ईच अदर. एंड दिस डील इज़ ऑल्सो अ टेस्ट केस of the potential of kind of economic collaboration between Pakistan and Russia as well. So हम कह सकते हैं कि जो changing regional geopolitical dynamics हैं, they are one of the factors why Pakistan is pushing towards buying Russian oil as well. ये तो हमने कुछ बात कर दी पाकिस्तान के reasons कि why पाकिस्तान chose this option. Let's come to कि इस डील के advantages क्या हो सकते हैं. वन बाय वन नाज़रीन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इकोनॉमिक्स एडवांटेज की बात करते हैं, जिससे मैंने पहले कहा ऑलमोस्ट वही एडवांटेजेस हैं. इट वुड गिव पाकिस्तान सम रिलीफ ऑन डॉलर्स, इट वुड गिव पाकिस्तान द चीपर एनर्जी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वुड हेल्प द करंट गवर्नमेंट ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन, विच इज़ ऑलमोस्ट 38% इन पाकिस्तान. अगले साल का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का, दैट इज़ बजटरी जो टारगेट है, दैट इज़ 21%. एंड द चीपर क्रूड ऑयल इज़ लाइकली टू हैव सम respite on the growing inflation in Pakistan. So it makes sense for it makes economic sense for Pakistan. Politically अगर मैं बात करूँ तो political advantage, especially geopolitical advantage की मैं बात करूँ तो उसका advantage पाकिस्तान को ये है नाज़रीन कि obviously this would foster Pakistan Russia relationship, और इस पाकिस्तान रशिया relationship के foster होने का one of the potential advantage would be कि हम इस deal को expand कर सकते हैं. हम we could push for Russian investments in energy in Pakistan. हम already जानते हैं नाज़रीन कि एक गैस pipeline है, that is LNG pipeline, which is supposed to be built by the Russians from Karachi to Lahore,
और ये जो साउथ नॉर्थ पाइपलाइन है विच इज़ बीइंग हेल्ड अप मेनली बिकॉज ऑफ दिस वॉर इन यूक्रेन, तो कहीं ना कहीं पे हम दिस क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है, दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ अ लार्जर रशिया पाकिस्तान economic collaboration, especially in the energy sector. And this is a field where Pakistan desperately needs a foreign investment, and no state is more historically experienced, technically capable than the Russians on gas pipelines. लेट्स कम टू नाज़रीन, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द चैलेंजेस टू दिस डिसीजन टू इंपोर्ट द रशियन ऑयल। नाज़रीन, वन ऑफ द चैलेंज वुड बी इकोनॉमिक चैलेंज। और वो इकोनॉमिक चैलेंज क्या है? देयर आर मल्टीपल इकोनॉमिक चैलेंज, बट मैं यहाँ पे दो की बात करूँगा। नाज़रीन, जो रशियंस हैं वो जो ऑयल देंगे पाकिस्तान के अंदर, बेचेंगे, वो क्रूड ऑयल है, और पाकिस्तान के लिए उसको पहले रिफ़ाइन करना पड़ेगा। एंड इट इज़ बिलीव्ड कि जो रिफाइनमेंट है, रिफाइनिंग है, उस हवाले से टेक्निकल पॉइंट पे तो हम बाद में बात करेंगे, बट उसकी जो रिफाइनमेंट है दैट वुड पोस्ट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ अराउंड $4 पर बैरल। सेकेंडली इसके अंदर जो इकोनॉमिक और किसी तक लॉजिस्टिकल चैलेंज है, दैट इज़ द रूट दैट इज़ टेकिंग प्लेस। नाज़रीन, ये ऑयल जो है रशिया से जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, दिस ऑयल कम्स फ्राम द Oman, and the nearest Russian port through which we will be shipped the oil, it would be around 8,000 kilometers from Pakistan. On the other hand, अगर हम इसको कंट्रास्ट करें यूएई के साथ और स्पेशली द गल्फ रीजन के साथ, तो जो नियरेस्ट गल्फ पोर्ट है जहाँ से पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करता है, दैट इज़ ओनली 1300 किलोमीटर्स। सो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 6.5 times जो रशियन पोर्ट्स हैं वो डिस्टेंस पे हैं, विच अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स मीन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वुड बी ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड इफ़ वी कंपेयर इट विद द गल्फ imports. So which will again add to the economic cost, or the argument is that ultimately it won't make much difference to the overall energy prices in Pakistan. It would be a difference, but not much. बट नाज़रीन, मेरा आर्गूमेंट इसके हवाले से थोड़ा डिफरेंट है। मेरा आर्गूमेंट ये है कि येस इट वुड मेक सेंस कि डॉलर टर्म में अगर आप बात करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर हम उसको रुपये में कन्वर्ट करें, बिकॉज पाकिस्तान के जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो काफ़ी गैप बड़ा है उसके दौरान, सो ऑलमोस्ट हम $286 ₹2 पर डॉलर पे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आई थिंक जब वो लिमिटेड अमाउंट भी डॉलर से रुपये में कन्वर्ट होगी तो मास रिलीफ जो है वो एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से। बट स्टिल द एग्जैक्ट कास्ट वुड बी इज़ येट टू बी असरटेन्ड। इस हवाले से जो रिफाइनिंग की कास्ट है प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये 1 लाख मीट्रिक टन जो मंगवाया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, इट इज़ मेंट टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। So it's a challenge at this point of time. We have yet to know कि क्या फाइनेंशियली ये feasible है भी या नहीं है। दूसरा बड़ा चैलेंज नाज़रीन, दैट इज़ टेक्निकल चैलेंज। नाज़रीन, ये जो रशियन क्रूड ऑयल है, इट इज़ हैवी ऑयल कंपेयर टू द अरब गल्फ स्टेट्स, और अगर हम इस पे बात करें तो जो रशियन ऑयल है, इट प्रोड्यूसेस अराउंड 50% फर्नेस ऑयल एंड 32% डीजल, as compared to the Arabian oil which produces around 45% diesel and 25% furnace oil. This detail is significant because पाकिस्तान के जो एनर्जी पैटर्न्स हैं, वो एनर्जी कंजम्पशन के जो पैटर्न्स हैं वो इस तरह से हैं कि हम डीजल यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इट मेक्स अप अराउंड 39% पाकिस्तान की ज़रूरत का, और जो फर्नेस ऑयल है जिसको हम यूजली पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, IPP इस्तेमाल करती हैं, उसकी जो कंजम्पशन है दैट इज़ अराउंड 15%। दैट मीन्स दैट पाकिस्तान अगर रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो उस क्रूड को जब रिफाइन करेंगे तो 50% जो है वो फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस होगा। वी ऑलरेडी हैव अ फर्नेस ऑयल सरप्लस बिकॉज IPPs आर अनविलिंग टू पिक अप द फर्नेस ऑयल बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। सो अगर हम इफ़ वी प्रोड्यूस मोर फर्नेस ऑयल इन पाकिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ द रशियन इंपोर्ट्स, तो उसकी जो इकोनॉमिक सेंस है वो नहीं बनेगी, वो सरप्लस में क्रिएट होगा, और जो डीजल चाहिए जो मेन हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मेन इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में होता है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होगी। सो वी हैव येट टू सर्टेन कि क्या हमारे लिए ये फीजिबल है टू प्रोड्यूस मोर फर्नेस ऑयल कंपेयर टू बिकॉज अरब स्टेट से जब हम इंपोर्ट करते हैं यूजली तो हम यूजली रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बट अगर हम क्रूड करें भी इंपोर्ट तो हमारे पास उसकी जो प्रोडक्शन है वो डीजल के लिए ज़्यादा होती है और फर्नेस ऑयल के लिए कम होती है, बट रशियंस आर द अदर वे अराउंड। तो टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान के लिए ये भी एक मेजर चैलेंज है। एक और टेक्निकल चैलेंज नाज़रीन, द कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो 100,000 रशियन जो मीट्रिक टन ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है क्रूड ऑयल, इट विल बी रिफाइंड इन पाकिस्तान
जो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है वहाँ पे। बट जो अदर रिफाइनरीज हैं दे हैव येट टू डेवलप कैपेबिलिटीज़। तो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए टेक्निकली फीजिबल है टू ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज टू ब्रिंग इन लाइन विद द रशियन क्रूड। तो ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान के लिए मौजूद है। देन देयर इज़ जियो पोलिटिकल प्रॉब्लम एज वेल। जियो पोलिटिकल नाज़रीन ऑब्वियसली दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो थ्रेट ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस है। अमेरिकन आज प्राइस कैप है। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी एंड देयर ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट इफ द रशियन वॉर गोज ऑन विच इज़ इट इज़ लाइकली दैट इट विल गेट प्रोलॉन्ग, तो अमेरिकन माइट गो फॉर डायरेक्ट सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल ग्रेजुअली। एंड इफ दैट हैपन्स इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए इस ऑयल को इंपोर्ट करना सस्टेनेबल नहीं रहेगा एंड इट वुड फेस द सेम फेट एज वी हैव सीन द फेट ऑफ द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन विच इज़ हेल्ड अप फॉर द लास्ट मोर देन अ डेकेड। Second challenge, Nazreen, that is likely to have an impact on the Arab states. Arab states, Pakistan की largest supplier हैं, especially Saudi Arabia and UAE. And if we divert our focus toward Russia, that might trigger an adverse effect on Pakistan, Arab states. Although financially speaking, it won't make much difference to Arab states' revenues because they are now shipping their transportation towards Europe. But Arab states have historically used the oil as a leverage against Pakistan. So if Pakistan moves away from Arab states, that would not end the Arab leverage, but it would significantly reduce Pakistan's dependence on them. And at the end of Arab leverage is not in Arab states' interest. So let's see how Arab states behave to this Pakistan's changing energy patterns as well. So ये भी एक चैलेंज होगा, पॉलिटिकल बैलेंस करना भी एक चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए बिटवीन रशिया एंड यूएस एंड बिटवीन रशिया एज एनर्जी ऑप्शन एंड अरब स्टेट्स। टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि जो रशियन क्रूड इंपोर्ट है दिस इज़ सिग्निफिकेंट, दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू मोमेंट्स इन हिस्ट्री जब एक स्टेट अपनी कंप्लीट ट्रांजिशन की तरफ बेबी स्टेप्स लेते हैं। दिस कुड बी अ बेबी स्टेप टुवर्ड पाकिस्तान डाइवर्सिफाइड energy options. This could also mean Pakistan's diversification of Pakistan's foreign policy. It could also mean the independence of Pakistan's foreign policy, which represents the changing regional and global dynamics. Let's hope that this political decision might also translate into economic relief for the masses of Pakistan who are already facing troubles because of some internal and external factors. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.